देख सकते हो सारे मॉड्यूल्स आइस सीट के अंदर है। टॉप आइस टॉप यहाँ है, उसके अंदर आप देख सकते हो ड्रिल करके ये सारे मॉड्यूल डाले गए हैं। मैं बहुत बोलते हैं कि M3 नेट करके ये है क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप इन मेडिटेरेनियन। उसमें सिमिलर मॉड्यूल्स हैं जो इंस्टेड ऑफ आइस वाटर में है। तो इसके तो बहुत मजेदार कहानियां हैं, क्योंकि बहुत सारे झुंड जो है किसी भी कि ओजोन परत में छेद होने की वजह से वहाँ पे जो है स्किन कैंसर के केसेस बहुत ही प्रोमिनेंट हो गए थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो लीक करे तो ओके। सो क्या करते हैं, हमें दूर से आने वाली लाइट बड़ी फेंट होती है और हमारा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें यूज करना पड़ता है कुछ जिनको कहते हैं टेलीस्कोप्स। और हम अगर देखें तो ये टेलीस्कोप्स की हर एक बैंड में हो सकते हैं। और ईजीएस्ट जो हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, वो है 2 लेंस ले लो, दोनों लेंस से आप किसी इन्फिनिट से आने वाली लाइट को आप कहीं पे फोकस करो और वो आपका जो है हो गया टेलीस्कोप। सो बेसिकली ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स आपने देखा होगा। प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमी में हम टेलीस्कोप्स यूज करते हैं हिल टॉप पे, जहाँ पे पोल्यूशन कम हो, लाइट पोल्यूशन कम हो और डार्क हो और चीज़ें जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना हो। जैसे कि माउंट आबू, ये एग्जांपल है माउंट आबू का, जहाँ पे मैंने अपने 6 साल गुजारे हैं। और आप लकी हैं तो टेलीस्कोप से इस तरह कुछ दिख सकता है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये ब्यूटीफुल है, देख जनरेट करते हैं। जैसे ये एक गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट में मैप है जो यूवी में, और एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको गैलेक्स बोलते हैं, उसने बनाया था। आप देख सकते हैं, ऐसे तो आपकी आइज यूवी देख नहीं सकती, तो आपको लगता है कि पूरा रात में देखे तो इम्प्टी है स्काई, बट रियली इम्प्टी नहीं है। अगर आप यूवी देख सकते तो आपको स्काई बहुत ही बदसूरत दिखता है, या हम एस्ट्रोनॉमी के सेंस में बोले बड़ा ही खूबसूरत दिखता है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ये है डिफ्यूज यूवी जो है स्काई मैप। अगर आपको स्काई दिखती तो आप सन को देखे होंगे, सन में बहुत सारे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में देखिए, ये है ऑप्टिकल, ये है यूवी। और यूवी में आप इस तरह के फिलामेंट्स भी देख सकते हैं। एक्सरे में बहुत सारे आप देख सकते हैं कि इसमें टाइनी स्पॉट्स भी मिलते हैं। यानी कि सन आपका ना केवल इसमें हमारी आंखें सेंसिटिव वैसे ही दिखता है, बट एक्सरे में भी दिखता है। ये क्या है, ये है मून है, लेकिन ये एक्सरे में। क्या आपको मून ऐसा ही दिखता है एक्सरे में जैसे जो है ऑप्टिकल में दिखता है? ये क्रिसेंट मून है। और ये आप सोचोगे ऐसे तो ऑप्टिकल में भी दिखता है, लेकिन एक अंतर है। आप ऑप्टिकल में देखते हो तो मंथ में हर दिन मून की साइज घटती रहती है। और मजेदार बात है, अगर आप एक्सरे में देखें तो मून की साइज बढ़ेगी घटेगी नहीं, मून ऐसे ही दिखेगा, आधा ब्राइट आधा फेंट। तो ओके, कमिंग टू अदर, तो हम जंप करते हैं अपने गैलेक्टिक सेंटर को। अपने गैलेक्टिक सेंटर को आप अगर एक्सरे में देखें तो कुछ ऐसे दिखता है। बहुत ही सारी गैसेस हैं जो ग्लो करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, if you have turned your car light on in a dusty road, what you will see? You will not see the light, only light from the beam coming from the headlights, but you will also see that something is glowing, something in between is glowing, and that is basically scattered light. So same phenomena हम अपने गैलेक्टिक सेंटर की साइड देखें तो हमें क्या होता है ना, we cannot see the sources, individual sources very resolved। पहली चीज तो वो दूर है। दूसरी चीज ये ना कि उनसे आने वाली लाइट रीप्रोसेस हो रही है, जो बहुत सारा मैटर यानी कि जैसे डस्ट है यहाँ पे, वैसे गैस है, और उसको हम लोग डस्ट भी बोलते हैं। डस्ट एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी में डस्ट का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स, कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो स्कैटर करते हैं, एटम्स हैं जो न्यूट्रल एटम्स हैं जो स्कैटर करते हैं लाइट को। ये है हमारा गैलेक्टिक सेंटर इन एक्सरेज। और एक्सरे और यूवी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यूवी एक ये जो नॉट यूवी, एक्सरे और रेडियो मिक्स किया हुआ है। वो एक्सरे इमिशन चंद्रा से लिया है और
रेडियो इमिशन मीर कैट करके है, जो स्क्वायर किलोमीटर एरे साउथ अफ्रीका में एक इंटरनेशनल सिस्टम तैयार हो रहा है, जो रेडियो में एक स्क्वायर किलोमीटर की साइज का एरे बनाएगा और बहुत सारे उसके एंटेना ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे। तो ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जिसका एक प्रिकर्सर है जिसको मीर कैट बोलते हैं। मीर कैट और एक्सरे को मिला करके इमेज बनाई गई है। यू कैन सी कि हम रेडियो में देखें तो ये रेड वाला पार्ट रेडियो साइड है और आप ब्लूअर साइड अगर देखें तो ये एक्सरे है। तो आप देख सकते हैं रेडियो आप बहुत सारे टाइनी फिलामेंट्री स्ट्रक्चर्स देखते हैं और ये फिलामेंट एक्चुअली स्पूरियस नहीं है, बहुत कुछ बताते हैं। जंपिंग, जो ये सोर्सेस हैं जिनमें हम लोगों को मजा आता है या बहुत सारी पब्लिक अवेयरनेस भी इसके बारे में बढ़ी है पिछले कई सालों से, ऐसे सिस्टम जिनको हम ब्लैक होल्स बोलते हैं। और ब्लैक होल्स आपको जैसे नाम बताता है, ब्लैक होल्स मतलब ऐसे सिस्टम जो आपको ना दिखे, वो नहीं दिखेंगे क्योंकि वो अपने पास। सो ऐसे एग्जॉटिक सोर्सेस हमें दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, जब उनके आसपास कोई मैटर पहुंचता है और मैटर की सप्लाई एनफ है, देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एक्रीशन डिस्क, क्योंकि मैटर अपनी ग्रेविटेशनल एनर्जी लूज करेगा ब्लैक होल पे गिरने के लिए। और जब ग्रेविटेशनल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और उनका एंगुलर मोमेंटम लूज होगा, उस प्रोसेस में डिस्क जो हीट हो जाती है और डिस्क एक्सरे में इमिट करती है। इनको बोलते हैं एक्सरे बाइनरीज। और अभी मैंने और रमांशु ने साथ में मिलकर के कुछ काम शुरू किया है इस तरह के एक्सोटिक सोर्सेस पे। दूसरे हैं पल्सर्स, जिनका मैंने नाम लिया था पल्सर टाइमिंग एरे के बारे में बताते हुए। ये न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, ये एक सरफेस इनके पास होता है और ये इतने हाईली मैग्नेटाइज्ड हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के जहाँ पे कनेक्ट करती हैं उस लूप में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल पास करते हैं, जिसकी वजह से ये डायरेक्शन में ग्लो करते हैं, मतलब ये इमिट करते हैं। और ये फास्ट रोटेटिंग है, जिसकी वजह से वो जो नैरो कोन है आपके सामने आती है और जाती है, आती है जाती है। ये इनका पल्सेशन मिली सेकेंड के लेवल की हो सकता है। नेचर ने बहुत ही एक्यूरेट क्लॉक बना रखी है क्योंकि इनका रोटेशन इतना परफेक्ट होता है। तो ऐसे सोर्सेज हैं, आप मिली सेकेंड के लेवल की पल्स मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं आपके पास एक्यूरेसी मिली सेकेंड से कम की होगी। सो वी नो सम सोर्स क्रैब, जो कि वेल नोन है। अभी एक्सरे स्काई देखें तो एक्सरे स्काई, ऑल स्काई जैसे मैप देखे थे, एक्सरे में केवल एक दो सोर्सेज नहीं है, पूरा स्काई ही हमारा बहुत ही ब्राइट है। ओके, रैपिडली जाते हैं गामा रे साइड। आप गामा रे देखें जो कि फर्दर एनर्जेटिक है, मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट या फिर गीगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट, जो कि आप देखें तो आई मीन 1000 या 10,000 मतलब 1/1000 टाइम्स एंगस्ट्रॉम, मतलब एंगस्ट्रॉम को भी बहुत छोटी छोटी डिस्टेंसेस में ब्रेक कर डालो तो उसकी जो है वेवलेंथ आएगी। ये हमारा मून है एक्सरे में, राइट साइड हमारा मून है गामा रे में। आप देख सकते हैं गामा रे में उसका जो मॉर्फोलॉजी बिल्कुल ही बदल गया है। तो आप एक ही बैंड में देखें तो आपको मज़ा नहीं आएगा। एक एक्सोटिक सोर्स के बारे में और बताना चाहते हैं, ये हैं जिनमें आपको स्टेबल जेट मिलती है और ये जेट आपके डायरेक्शन में होती है, यानी आपके आप जो भी देखते हैं वो रिलेटिविस्टिक होता है, मतलब कि जो पार्टिकल इनको जनरेट कर रहा है उसकी स्पीड होती है लाइट की स्पीड के आसपास। दूसरा है गामा रे बर्स्ट, जिसमें जेट फॉर्म होती है और वो जेट जब मटेरियल जो इजेक्टेड मटेरियल वो ISM से या IgM से इंटरैक्ट करता है तो आपको ग्लो मिलता है, आफ्टर ग्लो बोलते हैं। तो ये सारे ब्लैक होल से रिलेटेड हैं। अभी आते हैं इंडिया में इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या हुआ है, क्योंकि हमारी हाँ ये नेशनल साइंस है कि हमने क्या किया है तो अच्छी बात नहीं है। जो भी हमने स्ट्रीम मेंशन करी है उसमें इंडिया का योगदान बढ़ चढ़ के है। जैसे ये एक फैसिलिटी है जिसको हम बोलते हैं GMRT, इस जियांट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे। ये इंडिया का जो है प्रोफेसर गोविंद स्वरूप जी की देन है, जिन्होंने इसको जो है इंडिया में डेवलप किया। और आज GMRT अपने टाइप का
सिस्टम है जिसमें आप मीटर वेव में, यानी आप ऐसी वेव्स को स्टडी करते हो जिनकी वेवलेंथ मीटर के आसपास होती है। ये यूटिलाइज होता है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, बहुत ही कम्पिटिटिव है, आपको टाइम मिलना ऑलरेडी थे, लेकिन माउंट आबू की साइट बहुत ही लाइट पोल्यूटेड हो गई और वो साइट बहुत एप्ट नहीं रह गई। ये चीज जो है मेस, एक नया जो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप है, वो 30 मीटर है। एक तो साइज बढ़ा है, दूसरे हमने इसको जो है लद्दाख में किया है, आप इंस्टॉल किया गया है लद्दाख, चाइना के बहुत पास में। तो एक हिमालय में गामा रे ऑब्जर्वेटरी। और देन आपको अगर याद हो, एस्ट्रोसैट एक मिशन था, मिशन है जो कि इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया था। और टुडे एंड आई हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स फॉर एस्ट्रोसैट users and also payload operations center in Mumbai, and I'm still managing some of the responsibilities. आदित्य L1 जो लॉन्च हुआ है इसरो के द्वारा, और ये L1 L2 ये जो है लैग्रेंज पॉइंट बोले जाते हैं, ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सन और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल पॉइंट है वो नलीफाई, ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को नल करता है, यानी जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो L1 बीच में आता है, L2 दूसरे साइड आता है। तो L1 जो है उस पे हम सबमिट सन को स्टडी करने के लिए, इसीलिए इसका नाम आदित्य है। L1 पॉइंट पे है, लैग्रेंज 1 पॉइंट पे है, और जो कि 1.5, और उसने जो है अभी ऑब्जर्वेशन लेना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो कि ये सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। ये उसकी एक इमेज है जो सैटेलाइट बस में लगने से पहले की है। रिसेंट है एक्सरे पोलरीमीटर। तो रिसेंट एडवांसमेंट हुआ कि हमने फ्लक्स स्टडी किया, और अगर पोलराइजेशन ना देखे तो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो नहीं मिलती। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो ये है कि एक्सरे पोलरीमेट्रिक सैटेलाइट के फील्ड में भी इसरो ने, आई मीन इंडियन कम्युनिटी ने एडवांसमेंट किया है। और मैं जो है टीम से, जो टीम है विश्वजीत पॉल एट RRI, उनसे काफ़ी जो है कोलैबोरेट तो नहीं बोल सकते, बट I have interacted a lot with them. So because my field is X-rays as well. So already 2024 को लॉन्च हुआ था, यानी पहले दिन इंडिया के लिए फर्स्ट न्यू ईयर गिफ्ट था ये पोलराइजेशन सैटेलाइट। अभी रिसेंटली इसके फर्स्ट लाइट वगैरह देखे गए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी के लिए बहुत सारी जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं इंडिया में ही। वो स्टूडेंट्स या इवन फैकल्टी जो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड हैं और फिजिक्स या फिर इवन केमिस्ट्री साइड यूनिवर्स को समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इंडिया स्लोली जो है ग्रो कर रहा है और अपनी टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट को इंटरनेशनल फ्रंट पे रख रहा है। तो इस स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कैरियर के लिए, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं, टेक्नीशियंस बन सकते हैं। इवन अगर आप इन सब में नहीं इंटरेस्टेड तो भी समथिंग कॉल्ड एस्ट्रो टूरिज्म, जो कि स्लोली जो है बढ़ रहा है। आप एस्ट्रो टूरिज्म के फील्ड में जा सकते हैं। इवन पब्लिक आउटरीच इसका एक एग्जांपल है जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं यूनाइटेड साइंस फाउंडेशन के माध्यम से। हेलो, थैंक यू वेरी मच सर। क्या है? आपकी आवाज बहुत इको हो रही थी। आप पता नहीं, कोई अगर क्वेश्चंस है, कोई क्वेश्चंस है कुछ तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हेलो, क्या करेंगे? वहाँ पे सुनो उनको, वहाँ कौन है? वहाँ माइक बंद करे तो हो जाएगा, ऑडियो बंद करे वहाँ से।
वहीं रहो भाई, माइक बंद कर दो, ऑडियो बंद कर दीजिए। बंद कर दूंगा ना, बंद तो नहीं है, नहीं खुला है, लॉक वो ऑडियो बंद करिए वहाँ से। थोड़ी सी तो फोन में हाँ हाँ देखो हाँ ये कॉल है, ले गए हाँ हेलो हाँ मनसू, क्या सीन है वहाँ से अपना माइक बंद कर दीजिए सर, हाँ कर दिए हाँ मेरा? हेलो। हाँ माइक बंद कर दिया सर। आपका फिर और कल सर कंक्लूड करते हैं हाँ सर, कंक्लूड करते हैं कभी अभी को कभी और मौका मिलेगा तो आपका रखा जाएगा फिजिकली ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो विवेक शुक्ला सर को इनवाइट करें हम सर? सर ओके, आवाज़ जा रही है? हेलो 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 वहाँ से पहले बंद कर दीजिए, कर दीजिए वहाँ से Can hear you. हेलो Hello. हाँ सर, ऑडियो यू ऑडिबल सर हाँ। सो आई वुड लाइक टू हाँ, request Professor Devraj Singh to introduce our esteemed speaker, Professor Dr. Vivek Shukla sir. Okay. Dr. Ramansu, for introducing Dr. Vivek Shukla. Dr. Vivek Shukla is currently working as PhD scientist and postdoctoral researcher at the Energy Material Research Center at the Korea Institute of Science and Technology in Seoul, South Korea. He is specialized in the field of energy with a particular reference to one hydrogen storage materials, carbon dioxide storage materials, metal hydrides, and complex hydrides. So I request Dr. Vivek Pandey to deliver your talk, but please in brief. Thank you. Okay, sir. Okay. So, honorable respected ma'am, Vice Chancellor ma'am, and the chairman of the event, P.K. Yadav sir, and co-chairman, Dr. Dhiren Kumar Chaudhary, and who is also head of Center for Renewable Energy, convener Ramansu ji, who's and then organizing secretary K.K. De ji, and thank you very much for inviting me to present some of my work which I'm doing and at here in Korea. So today is very special because it's National Science Day, 28th of Feb. So I will discuss about some why the hydrogen research and its technology is so important for present generation and present and future generation, and I will discuss some of the work which I'm doing here. So before I start, I briefly this is the glimpse of my institute, the KIST Korea Institute of Science and Technology, which is situated in the uh, capital of South Korea, Seoul. And one of very important feature of this institute is the number of patent which is filed from institute is so high in the world, and this is the oldest institute of Korea. So, and this is my team, which basically these are four students with working with four people working with Dr. Yangsu Lee, who is uh, the team leader, group leader. So here we are the two Indian people working with her. So this is our center, some the center people and some of our colleagues. So these are the content of my talk, which I will introduce the hydrogen and today event, and then why hydrogen, and then what is the compressor
and what its role for the in the hydrogen economy. And some of the work I will after discuss about the which I made the low cost metal hydride for hydrogen storage, and then its conclusion. So to theme of this year, the man who born Sir C.B. Raman in November 88 is very important because he is a not a science background person. He is a graduate person. Visible now? Yes, now it's visible. Thank you. So, so why this day is important? I was discussing about that on this 28th of Feb, first time C.B. Raman with his student found that when the monochromatic beam of light is scattered from the transparent medium, so it not only contain the original color but it also contain other colors. So this is scattering later on called as the Raman effect, Raman scattering, and for this in discovery he awarded as the Nobel Prize in 1930. So this is the some brief introduction for this famous Indian scientist, and this is some the photograph of the Raman which I found from the in the internet, and which also shows some the scattering, different type of scattering which happen when the it interact with the molecule. So Raman, Sir C.B. Raman, not only he worked with the Raman scattering and X-ray diffraction, but also he works on the acoustic, optics, dielectric, ultrasonics, photoelectricity, colloidal particle. So the President of India in 2005 wrote a letter for whole nation that this day should be for the scientists, to celebrate the scientists, to encourage the young minds. So he wrote the letter for the citizens, and very famous scientist Einstein also wrote about the Raman. The C.B. Raman was the first recognized and demonstrate the energy photon can undergo the partial transformation within the matter. I still recall vividly the deep impression that this discovery made all of us. So he 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 is the one of the Indian scientists who make the impact worldwide a lot after his discovery. This is the some his contemporary people, the first spectrograph which invented by Christoph Bussens, and then the Raman spectrograph, the first spectrum which has been taken from CCL4. So the Raman spectrometer spectroscopy is so important, and his discovery was why so important, because some of the magazine and US people are searching about that whether how much cost it contain the in discovery of the Raman effect. So a lot of they have contacted people, and they couldn't actually the calculate the value, the money spent it for this discovery. But in 1970, Raman, when it asked for by Raman, so he said that when I got my Nobel Prize, I hardly spent 200 rupees on my equipment. So this is the one of the very cheap, and we cannot realize actually on these times that in 200 rupees this type of discovery can happen. So coming to, so we should remember him and always try to make his role model for our field, and try to make some good comes out with good result in our fields. So if we see this slide, so we can see there is a different animal, birds, and then fishes are dying. So this is why they are dying. So the question arises why they are dying. So this is because of the hot weather and the weather climate change effect. So the average surface temperature of Earth is increasing. This is the first figure which we can see is
is from the Africa. So here we can see the animals are dying, and also this is the in slide figure we can see the fishes nearby the ocean banks are dying. Also, the feathers of the birds become shortened. So this is only happening because of the harmful effect of global warming, and this is happening because of we are increasing our CO2 emission day by day, and in the consumption of our luxurious life and other energy consumption aspects. So if some resources are fixed and they are going to completely replaced in the next few years, also our increase in living standard making, if we see here, the energy and gas shortfall is increasing day by day. And when we use the natural sources, it emits CO2, which is the greenhouse gas, which absorb the emission of infrared emission, and it cannot re-radiate it. So it's very important that we need to reduce our CO2 emission. So CO2 emission in India is basically from the industry and transport sector is 35% contribute. So which emit the most of the CO2 in car, motorcycle, taxi. So cars emit the maximum CO2 in the atmosphere. So this is the some newspaper report that how much temperature it increasing like city wise. So these are the some article published in Dainik Jagran, like how they are impacting the average temperature, how it is increasing, and the rainfall pattern and the summer times it also changing. So this is very important to think about it. So also if we see here the parrots and other animal, they are changing their looks. So this is happening because of global warming. So the question arises whether we have the solution. Answer is yes, we have the hydrogen. We have a hydrogen as a fuel is a solution. So hydrogen is the one of the lightest element in the periodic table. But its energy content is 3 times larger than compared to other liquid hydrocarbon. So also it's there is a no toxicity, means when we burn the methane petrol, so it emits CO2, but when we burn hydrogen, there is a no emission of CO2. So it's completely clean fuel, and however its diffusion coefficient is high compared to the methane and petrol. So when it burn, when if 2.2 gallon of water we can produce it, we can electrolyze it by using of electricity. 1 gallon of petrol it needed, and it comes to hydrogen. And when we use the hydrogen, so it again we can use for transportation, and again it burns back to hydrogen. So it forms the clean and closed cycle. So for hydrogen as a carrier and hydrogen for as a fuel, we need in hydrogen, which actually is hydrogen economy. So which includes production, storage, and application. So 3 aspects of it. So production, we need to cleanly produce it, like green production is very important, green production of hydrogen. So if we can produce hydrogen from the photovoltaic mean, and we can use the electricity in generation of water, oxygen, and hydrogen. So we can store the hydrogen in the metal hydride tank, and then we can store the hydrogen, use its application, which in turn it produce the water. So it form the completely closed cycle. So these are the some of the work which I did at during my PhD, and then I'm working at here some of the work. So why storage of hydrogen is so important in like production and storage and application prospect? So because the hydrogen is the lightest element, and
its boiling temperature is very low. It's 20 Kelvin, and its density is also very low, 0.08 gram per liter. And 1 kilogram of hydrogen at STP occupy nearly 11 meter cube volume. So we need to store it cleanly and efficiently. So there is a three way to store the hydrogen. So first we can store the hydrogen in gaseous form, in the liquid form, in the solid state form. So but the first one, if we see the, which we can also see in our labs, that hydrogen stored in the cylinder, but it is very actually, it cost is very, consumption in pressurizing is very high, the cost of consumption in pressurizing, so it is very expensive and risky. Other is the liquid hydrogen. So if we need to liquefy it, so we need to go minus 257 degree or lower temperatures, so it is also very expensive and risky. So solid state storage in the form of hydride is the safe and efficient mode. So these are the various ways to store the hydrogen. So the physical mode is the compressed gas, and then cold cryo liquid hydrogen. But the material base is like some physical physiogenosis material like MOF and carbon based material, those some porous material, and then liquid liquid organic toluene, and then these are the interstitial hydride, complex hydride, and the chemical hydride. If we see yeah, so before going to the next slide, I would like to remember my respected Guruji also, and he is also known as the Hydrogen Man of India, because his R&D, research and development on this hydrogen based technology actually impact a lot for India. So he used he actually expired on 24th of April 2021, and he usually used to say his student and his colleagues that candle can enlighten others, candle when itself it enlighten, in the same manner the person can enlighten others when he enlighten himself first. So here's the Professor Kalam also visited our lab. So this is the photo at that time. So this is the sum of the work which I would like to show, because today is the theme of the today Science Day is also Viksit, the technology for Viksit Bharat. So I would like to show some of the technology which has been developed at the BHU, at R&D Center, Hydrogen Center. So this is the home cooker, and I will also discuss about the international context, whether how much the improvement has been done, and how other countries and other people are working. So I will show after that. So this is the electrical genset, and then hydrogen fueled the two-wheelers, hydrogen fueled three-wheeler, and hydrogen fueled four-wheelers. So these has been made up and prepared at the Hydrogen Center BHU. And nowadays, as there's a lot of interest on hydrogen, so a lot of companies are interested in making the fuel car, buses, and also launched his hydrogen fuel bus also. So Tata is also actively working on this aspect. So for India context, the government of India also launched the National Green Hydrogen Energy Mission in January 2023. So his aim is to make his reliable society the greener society, and they have said India should be energy independent by 2047 and achieving the net by 2070. So this is the sum of hydrogen related technology which has been developed in worldwide context. So if we I have visited the World Hydrogen Technology Convention Tokyo in 2018, where I saw that Japan is very active in the hydrogen based technology, where Toyota has developed his car, not only car but buses. And you can, if you imagine, there is only 2 stations on hydrogen fuel station in 2014, but now they have 1000 station, nearly 1000 station in the Japan. So Japan is the frontier in working on the hydrogen related technology. And then
of course, the Korea also working a lot hard, and they have also made their fuel cells. The Hyundai Motors make the fuel cell buses, and then his car, the Nexa car, and Germany also works with this aspect, and they made the train, world first operational hydrogen train, which run on fuel cell. So these are the some international context, some developments. So so this slide shows that the periodic table with the there are how many elements which can form the hydrides and non-hydride forming element. So if we can see in the red one is the hydride forming element, but if we see here the formation enthalpy delta H, so it is too high for these red symbols. Means at room temperature this metallic element cannot form the hydride at room temperature. So the to reduce the formation enthalpy, still the research R&D is necessary. So till over many decades of research, if we see, there is a three different type of material which has been best suited, and first one is the physiorsorption material like carbon based material and MOF material, which have the porous in their structure. So, and second one, there are the complex hydrides which have the high capacity of like 5 to 10% of capacity, and the third one, the intermetallic hydride, where this is the red one is the hydrogen molecule is coming and coming out, coming in and coming out. So they actually stored in the they come in the molecular form, and when it comes up to the surface, it break the molecular form, break into the atomic form, and then they store in the interstitial of the hydride. So these are the some target and comparison of the other hydride, feasible hydride, like Department of Energy. US Department of Energy set some target like 4.58% of target, and operating temperature 100 to 150, and cycle life 1000 to 1500, and charging time should be 3 to 6 minutes. So there are many hydrides which has been worked, and this compressed hydride which have capacity 2%, but the 400, this bar is achievable around 4.5%. But if we see this intermetallic hydride, which has been largely studied on this in the material aspect, the elemental hydride magnesium and this complex hydride are actually shows the very high capacity, which is here it is 4.58%, but they are showing the capacity higher than the target. But issue is that the temperature of this operation temperature is very high. Like we need the 150 degree centigrade, but here is 400 and nearly 180 degree to 200 degree centigrade, and here the problem is the cyclic stability. So we need to still the research and development is necessary for to reduce its and to meet the target. So the magnesium is the sixth abundant element on the earth. So but the problem is that with this material is it shows the high dissolution temperature and poor kinetics when it absorb and dissolve the hydrogen. But the advantage is that it's eighth abundant element and its cost effective material. Its capacity is 7.6 bit and the high volumetric capacity. So if we see because the dissolution temperature of magnesium hydride is very high, so if we destabilize this hydride, if we destabilize with this hydride using some catalyst, we can lower down the temperature of this hydride. So a lot of effort has been done. So at all BHU also and worldwide also. So I have employed nearly 2-3 work I have published on this material. So there are different way, like we can use the catalyst, we can use the
nanocrystallized means we can make it nano material, nano size it, and then we can make the composite hydride. By these three aspects, we can improve the desorption temperature and capacity, overall the cyclic stability. So coming to the compressor aspect, why the compressor is very important, as I briefly, it was in my title of the talk. So the compressor is the system which actually increase the pressure by reducing the system volume. But if we see in the scheme of this closed cycle, where production to application, if we produce the hydrogen from here and then we use for production of it, hydrogen, we use electrolysis. So the electrolysis, when we do electrolysis, the pressure of hydrogen, it comes in the bubbles form, so the pressure is very low. So the hydrogen which coming out from the electrolysis should be compressed. So nowadays actually the compressor, this compressor cost is around 50% of total this hydrogen filling systems. So this should be replaced with the convenient system to compress it. So because these compressor basically work with the mechanical compressor and they have their own many disadvantages. So a lot of other like electrochemical compressor and mechanical compressor has already been worked in mechanical compressor, because it has several disadvantages, because it has the many moving part and the material which is made actually the tank, so it also shows some cracks when it interact with the hydrogen. So it become very means very, it will be very hard if some accident happen with hydrogen. So it is high consumption it also consumes the high consumption of energy. So the compressor made up of metal hydride is why is very demanding actually, because it also this works on the thermal energy and it compress the hydrogen and at certain extent. So this is the basic principle of one metal hydride compressor. So if we know some about how the hydride actually, those who know about it, I don't know how many people, but if metal hydride form, like there is a metal and it react with hydrogen, so it form the M and MHX. So metal and it react with hydrogen, it form MHX. So this show by this this figure and this plot. And when we dissolve it, so that we need to give some energy to the hydride and it start dissolving. So this comes here. So this is one cycle of absorption and then again the desorption. So the cycle will be closed. So during the absorption, it releases heat because there is an exothermic process, and while the desorption there is an exothermic reaction occurs. So for single stage hydride, when it absorbs hydrogen at low pressure, so we could use as a inlet for the electrolyzer, like because the pressure is coming very less, so low. So this two hydrogen, like if 10 bar is okay, so we have to search about the material so which can absorb the hydrogen at 10 bar and room temperature, and then the alloy which can dissolve the 25 bar. So present scene is that if we can, for refueling station, if we can have around 300 bar,
then the many problem can be solved. But the ultimate goal is 1000 bar. So we recently developed it because at here KIST Korea, the compressor, the testing has been successfully done for 2 stage of compressor up to the 300 bar. So we are actually working with here with Hyundai Motors and then Korea in Industrial Institute, Technical Institute. So and we have demonstrated it. So and further we are trying to make it 1000 bar compressor. We are trying it. So but presently we are testing around the 300 bar and trying to make the material as cheap as possible, because we use titanium, zirconium, chromium, manganese, iron. So we are trying to replace some of the material with like ferrovanadium, which are and the scrap materials. So this is the schematic diagram where the first stage we use the 10 bar pressure and absorb the hydride at here and dissolve it at 80 degree, and it come into the second stage. So this material absorb at 80 degree and pressure of nearly 80 bar, and again it dissolve it. For dissolving it need around 150 bar and dissolution of pressure around 300 bar. So the cycle will be closed and we run it and these are the some figures and results which we got from this experiment. So we have first optimized the material and then use it for the compressor and test it successfully. Coming to the second part, yeah. सर थोड़ा Is it जल्दी करिएगा, कंप्लीट करिएगा थोड़ा, क्योंकि okay? समय Okay, काफी हो गया है। okay. I will conclude in. Can I have 5 minutes? Maybe 5 to 10 minutes. Okay. Thank you. Yeah, it will be finished in 5 minutes. Okay. So the titanium is one of the important element which form the hydride is titanium hydride is change the structure from hexagonal to cubic. The formation enthalpy involved in this process is around 141 kilojoule per mole. But for room temperature viable hydride it should be minus 20 to 40 kilojoule per mole. So we are trying to make some cheap low cost titanium hydride and aluminum is separated. So this is the one of the material which has been worked a lot to actually address this issue. So we have actually solved this issue by substituting the oxygen, not substitution but it's inclusion of oxygen in the TiAL system. So this is the ternary phase diagram of the TiAL system, where we prepared 7 composition which change. There is a bit different ox 3.3%, 10%, and 20%, and then without aluminium and then 20%. So destructive hydrogen and disproportion occur, and the capacity of the system has been also improved, and nearly around 3.58% we got reversible capacity we got in the optimized sample. So this is the some experimental procedure which we have used the arc melting to prepare the sample, and we have used the titanium oxide, and then arc melt it and make the pellet, and then we tried first at the room temperature, and then as it cannot be activated at the room temperature, so we tried at little bit higher temperature, and we try to optimize it in order to check it. So we have done the EDS analysis of all the samples. So